Hi, greetings from SDMIC classes. Nothing is impossible for a brave and hardworking person with a willing mind. This is my regular advice to you. Now we continue with the chapter 1, Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts, part 12. This is a 12th class. Hope you must have watched the previous classes. I believe you all must have understood. Now I request you all to pay attention. We were discussing some important adjustments in the final accounts. Almost discussed 22 points. Now we have to complete that other hidden adjustments in the trial balance. So let us continue. See, up to 22 points we discussed. Now these are it's not necessary to repeat again and again. I'm not repeating that previous 22 points we discussed again and again, because it is going to be a loss of time. So better we will continue with the other things. And if there is any doubt in the previous the adjustments, you can refer it again and again, watch again and again, and get it clear. And now these are the 7 adjustments, hidden adjustments given in trial balance. So that is almost a similar things. If, for example, salaries and rent, which is already done. Insurance premium is a prepaid expenditure, what I have shown in the examples. Advertisements also that I have given in that previous thing, like deferred revenue expenses, 28 adjustment. The same thing. Instead of here it is taken 5 years, it is taken a year, 4 years. So the adjustments are all similar. Rent received in advance, same, almost same. So still for your clarification, I will be just discussing it again to just get it clear. Only these 3 points are the new things that you have to just understand. That okay, this point number 5, 6 and 7 is a new thing that you have to learn. Okay, this also already means I just discussed in other part also, in the earlier part, but still more clarification I will explain you. Now let us start first one. But here just to see that these 7 adjustments, no hidden adjustments, it is 7. I have continued just to correlate with your this thing. 22 is continued with the 23, 24, 25, 26, 27, 28 and 29. These two adjustments are just to match, means you should not get confused. That is the reason. For example, if I take 1, so you can it will not be matched here again, because it is one is already given here. So I just want to just give you a cross reference, numbering cross reference. For example, if you get 1 here, the closing stock, here is a credit item, it is a credit entry is here taken, then the debit side means asset side it is taken, here it is. So what I am telling you is that means if it is taken again with the entry number 1, it will be confused. So that is the reason I am just taking it here, continuing with the 23, 24, 25, 26. So now salary is salary or rent paid for 10 months. We were shown it as 11 months, but now I have split into 2 months. Again, 10 months it is paid and 2 months it is rent. It is payable balance. So add the amount of salaries rent for the for 2 months to the salaries or rent respectively. Show separately the amount of salaries and rent for 2 months on the liability side of the balance sheet as outstanding liability, outstanding salary, outstanding rent. So now let us see how the entry is passed. It is similar. It's entry number 2 in the previous adjustments. Adjustment entry number 2, outstanding expenses we have taken. No, so this is the same entry, where here it is just see 1st April to 31st March, 12 months. Example, salary is 6 lakhs. 1st March to 31st March, and salary paid for the 5th on 5th April. So that means 1st March to 31st March salary is paid on 5th April. So 1 month the salary is outstanding. That's that is shown. Or just see this entry number 2. Entry number 2, salary, total salary for 11 months it is taken, yes, 12 months it is here. So now the adjustment entry we will show you. That means almost the second entry number 2 is the same, but here it is shown
here when it is given 10 months, I was taken here there 11 months, so now it is taken as a 10 months. So 10 months salary is 45 lakhs for example, 45 lakhs, and salary for 11th month 3 lakhs, and salary for 12th month 3 lakhs, so total 6 lakhs to be added. So 45 lakhs plus 6 lakhs is equal to 51 lakhs. So in that entry we will how the entry is given. The debit effect will be given in the profit and loss account, and credit will be given the credit liability side of the balance sheet as outstanding salary. Now just see the debit effect. Outstanding salary 6 lakhs for 2 months, 3 lakhs at the rate of 3 lakhs rupees each. So this will be added, okay, and total 51 lakhs taken to the outer column. This plus this outstanding salary, okay, 51 lakhs. This 6 lakhs for 2 months salary payable is taken to the liability side of the balance sheet. See, for example, what is the entry number? Entry number 23. Okay, now balance sheet, outstanding salary for 2 months salary 6 lakhs. This is entry number 2 and 23. Okay, so hope you understood this better. Okay, now so 2 months salary is taken as an outstanding limit. So credit effect is given has come here, and debit effect is here. Now now since it is told, that means it is given that even rent paid, it is the same thing, but for your when in the this thing it is salary or rent it is written. So I will show you that rent also. Rent paid for 11 months. It is paid for 10 months, and here it is paid for 11 months. I just for your better understanding I am giving it here. So say paid for 11 months at the rate of 50,000, it is 5,50,000. 50 11s are 5,50,000, and then balance payable for the 12 months is 50,000. So 6 lakhs is there. 5,50,000 plus 50,000, 6 lakhs. So this is debited, added to the profit and loss account. So debit effect is come here in the profit and loss account. Credit effect on the liability side of the balance sheet. Just let's see that the entry. 23 entry number, rent paid up to 11 months is 5,50,000. Add outstanding 12th month, added 50,000, 6 lakhs. So debit effect is here. Now credit effect, just see 23 entry number, outstanding rent 50,000. So it is clear. Now 24th adjustment, insurance premium paid in advance. In the above example it is given for 6 months. यहाँ जो हम लोग ने insurance means third entry, थर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस में हम लोग ने इंश्योरेंस का बताया था. दिस वाज गिवन एज 1,50,000 टोटल पेमेंट किया था, मीन्स 1 अक्टूबर को. 1 अक्टूबर को दिया रहेगा तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च तक 6 मंथ्स है, तो 6 मंथ्स का डेबिट किया ये जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, और बाकी का जो बैलेंस है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया. सो दैट इज अ थिंग. एंड हियर इट इज वेयर इज इन हियर इट इज okay. So that 6 months का ही मैंने ये ले लिया. So the entry is exactly the same. इंश्योरेंस पे टोटल कितना है 1,50,000 लेस प्रीपेड. थर्ड एंट्री था, उसका 24th एंट्री जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो दैट इज़ द थिंग. लेस प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस 75,000. सो टोटल डेबिट कितना हो गया 75,000. ये यहाँ से रिड्यूस हो गया, ये यहाँ से रिड्यूस हो गया तो मीन्स इधर क्रेडिट इफेक्ट इधर आ गया, तो यहाँ से रिड्यूस हो गया मतलब डेबिट साइड में ये रिड्यूस हो गया, मतलब इट इज़ अ क्रेडिट इफेक्ट इधर आ गया. एंड देन द डेबिट इफेक्ट बैलेंस शीट में आ गया एज एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज प्रीपेड इंश्योरेंस. सी तो थर्ड एंट्री भी है, 24th एडजस्टमेंट एंट्री. सो दिस इज क्लियर. Now for your better understanding, जो प्रो रेटा बेसिस पे कैसा कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल एनी डेट दैट इंश्योरेंस प्रीमियम कैन बी पेड. फॉर एग्जांपल वो 25th नवंबर को ये जो 1,50,000 पेमेंट किया करके समझो. दिस एंट्री आई एम नॉट पासिंग बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर क्लैरिफिकेशन आई एम जस्ट गिविंग इट. सो
what will be the amount to be debited and what should be credited. In this the prepaid amount will be, prepaid amount कितना है, पेमेंट कभी किया था 25th नवंबर 2021 को. So 25th नवंबर 2021 to 31st March 2021 127 days होता है. That means 6 days नवंबर का, then December, January, February, March 27 days. तो ये 127 डेज़ का 1,50,000 टोटल पेमेंट किया था, उसमें से 127 डेज़ का डेबिट होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड द बैलेंस अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए प्रीपेड इंश्योरेंस से. दैट मीन्स 1,50,000 अपॉन 365 मल्टीप्लाइड बाय 127, दैट इज इक्वल टू 52,192. तो यहाँ 52,192 होना चाहिए. तो नाउ and prepaid expenses, prepaid insurance कितना हो गया, prepaid amount will be April, May, June, July, August, September, October, November, 24 days. अब because 25th को ये पेमेंट किया है तो 24 days, तो 238 days का prepaid हो जाता है, मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए चला जाता है वो. तो 1,50,000 अपॉन 365 मल्टीप्लाइड बाय 238, that is 97,808 is the prepaid insurance. So यहाँ का एंट्री कैसा होगा, 52,192. ओके, सॉरी, प्रीपेड कितना है, 97,808 हो गया. 52,192 डेबिट हो गया, और ये जो 97,808 को यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस में आ गया. 97,808 यहाँ प्रीपेड में आ गया. ठीक है, दिस इज द एंट्री. यू गॉट इट नो. यहाँ प्रीपेड मीन्स यहाँ इतना ही ये पर्टिकुलर साल का एक्सपेंडिचर में आ गया. दिस शुड बी कैरिड फॉरवर्ड एज ए प्रीपेड एक्सपेंसेस. यू अंडरस्टूड. वो प्रोराटा बेसिस में ऐसा कैलकुलेट करता है. वैसे इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल का उसका हिसाब से ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, अदरवाइज यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. ये मैं आपका मीन्स अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है जस्ट. ओके, सो नाउ आई थिंक दिस एडजस्टमेंट एंट्री इज ऑल्सो क्लियर. Okay, now 25th adjustment. This is similar. This is also similar to entry number 20. Advertisement expenditure जो हम लोग ने 20 एंट्री नंबर 20 है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 years यह है. तो अगर 4 years का हो जाएगा तो दिस विल बी 25. फॉर एग्जांपल 1 लाख अपॉन 4 years का हो जाएगा तो दिस विल बी 25,000. 4 years में 4 years के लिए एडवर्टीजमेंट किया है, डेफर्ड टोटल पेमेंट 1 लाख किया है फॉर दैट एडवर्टीजमेंट कैंपेन, एंड द इफेक्ट विल बी द इफेक्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट विल बी फॉर 4 years. तो 4 years में राइट ऑफ करने का है तो उसको 25,000 के हिसाब से होगा. मैं यहाँ 5 years के लिए लिया था, फॉर एग्जाम्पल उसमें वो 5 years के लिए लिया था. इसके लिए अभी ये एडजस्टमेंट एंट्री में इधर 25th एडजस्टमेंट में बोल रहा है 4 years, तो वहाँ 25 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 20. तो एंट्री हम लोग का तो सेम ही है. किधर है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर एग्जाम्पल से वो 60,000 था, और डिफर्ड एक्सपेंसेस वो जो 20,000 का था, इसका जगह पे उधर अगर 4 years का रहेगा तो 25,000 हो जाएगा, इधर 85,000 हो जाएगा. और यहाँ का जो बैलेंस शीट में प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके आ जाता है, यानी तो डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 25,000 आ जाएगा, तो ये 75,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. हम लोग ने ये जो प्रीवियस जो अपना जो किया था उसके लिए जो ये एंट्री नंबर 20 है, ये एंट्री नंबर 20 का हम लोग ने 25 ये भी हो गया. ठीक है, और यहाँ 20 और ये 25 हम लोग ने 20 ले लेते हैं. ठीक है, तो वो क्रॉस रेफरेंस तो ए ही हो जाता है. ओके, 25 तो वो एंट्री भी आप अपना क्लियर हो गया. नो रेंट रिसीव्ड फॉर 11, वो भी रेफर कर लीजिए. 23 एंट्री नंबर 23
रेंट पेड, ये रेंट पेड का जो तो होता है उसका जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा ये जो रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स है, रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स उसका जस्ट ऑपोजिट एंट्री होगा, रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स जिसका जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स, रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स का ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स। यहाँ क्या हो गया, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया था, ऐड किया था, इसके साथ में ये ऐड किया था, मतलब वो डेबिट इफेक्ट हो गया और आउटस्टैंडिंग रेंट को लायबिलिटी साइड में लिया था। इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में रेंट रिसीव्ड में ऐड हो जाएगा ये रेंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। so फॉर एग्जांपल ये 2,20,000 जो है वो प्लस 12th मंथ का 20,000 ऐड हो गया 2,40,000 और क्रेडिट इफेक्ट रिसीवेबल में मीन्स एसेट साइड में आ जाएगा, एसेट साइड एस रेंट रिसीवेबल। बताता हूँ अभी, रेंट रिसीव्ड 2,20,000, रेंट ऐड जो 12th मंथ का जो रेंट रिसीवेबल है वो 20,000 2,40,000, तो 26 एंट्री नंबर हो गया। नाउ हियर द 26 एंट्री नंबर इज 26, रेंट रिसीवेबल इज 20,000। ओके, so this is the entry. So this clear. Now 27th point is 10% loan. This is also explained in part actually in other working. Borrowed on 1st January 2018 and accounting year ends on 31st March. मतलब 3 months का actually जनवरी फरवरी एंड मार्च वो 3 months का लेना चाहिए, किसमें, ये जो पर्टिकुलर ईयर में जो रेंट इंटरेस्ट को प्रोविजन करना पड़ेगा। इफ़ द लोन जो अनसिक्योर्ड लोन है वो जो लोन का जो 31 मार्च को जो इंटरेस्ट का वर्कआउट करके जो उसको 31 मार्च के जो इवनिंग में या नाइट में जो बिफोर क्लोजिंग दैट थिंग वो एंट्री पेमेंट कर दिया, देन दिस एंट्री विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट एज अ लायबिलिटी, whereas if it is not paid then it should be either added to the thing or shown as a separately as a interest payable. So यू गॉट इट नो। अगर 31 मार्च को शाम को अगर पेमेंट किया होता तो उसका इफेक्ट एक इफेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएगा, सेकंड इफेक्ट आ जाएगा किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ओके, इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। अगर नहीं पेमेंट किया तो फर्स्ट इफेक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट करके, देन वो इन प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, या नहीं तो वो सेपरेटली शो करते हैं। नाउ एग्जांपल करता हूँ, से बोरोड लोन बोरोड ऑन 1st January 2018 15 lakhs, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो 1,50,000 हो गया, इतना है। तो इंटरेस्ट फॉर 3 months 1st January to 31st March 1,50,000 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 is equal to 37,500. Or to add to the loan on liability side of the balance sheet, that is 15 lakhs plus 37,500. अगर ये पेमेंट किया होता है तो इसका नहीं आएगा, यही मीन्स ये आएगा, इसका ये जो 37,000 का इफेक्ट बैंक में आ जाता है। ओके, या बैंक बैलेंस इतना रिड्यूस हो जाएगा इतना, या अगर नहीं किया रहेगा तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो एंट्री अभी अब हम लोग देखते हैं 20 एंट्री नंबर 27, लेट्स सी। एंट्री नंबर 27, इंटरेस्ट ऑन लोन 37,500, और ये जो बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड में लोन टेकन कितना है 15 lakhs है, और इंटरेस्ट फॉर 3 months ड्यू बट नॉट पेड कितना है 37,500, तो टोटल आ गया 15,37,500. So this entry is also clear. There is no doubt. It's very simple. It is not that much. One should not have to break their head. Only to just apply mind and just focus. Just थोड़ा practice करेगा तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. It's not that much difficult. Very simple. Now 28 adjustment entry is 16% investment. इन्वेस्टमेंट गोल का तो क्या है, कंपनी या मीन्स बिजनेस या कोई भी इन्वेस्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग सम
इंटरेस्ट और इनकम, जो इनकम अभी फॉर एग्जांपल कोई किसी का रिटायरमेंट के साथ में 50 लाख मिला या 1 करोड़ मिला, वो बैंक में जाके एफडी में इन्वेस्ट करता है या कुछ किधर भी कुछ शेयर्स में या किसी में इन्वेस्ट करता है। एफडी में इन्वेस्ट करेगा तो इंटरेस्ट मिलता है, या शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा तो उसका जो राइज एंड फॉल के हिसाब से उसका शेयर वैल्यू बढ़ता है या घटता है या कुछ होता है। लेकिन एफडी में इन्वेस्ट करेगा तो उसका इंटरेस्ट रेगुलरली मिल जाता है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से ये होता है, तो इन्वेस्ट करता है पब्लिक कुछ मेकिंग सम इनकम, मनी इन्वेस्ट करता है। तो 16% पर एनम, 16% इन्वेस्टमेंट बोलेगा तो इन्वेस्टमेंट मेड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%। सो परचेज दिस इन्वेस्टमेंट ऑन 1 जनवरी 2019 एंड द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, वो भी 3 मंथ्स का लिया है। सो सेम ये 15 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। 15 लाख इन्वेस्टमेंट करके 16% इंटरेस्ट कितना साल का कितना हो गया, 2,40,000। नो ये लोन लिया था और उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा बिजनेस कंपनी को। हियर कंपनी इन्वेस्ट किया है या एफडी डाला है, उसका इंटरेस्ट कंपनी को मिलेगा। सो दिस इज एन इनकम, दिस इज एन एक्सपेंडिचर, दिस इज एन इनकम, ठीक है। तो वो तो 2,40,000 साल का इंटरेस्ट हो जाता है। तो उसमें से 3 महीने का ले लिया, इधर का जैसा एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन 2,40,000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 60,000। तो 60,000 तो डेबिट इफेक्ट क्या होगा, डेबिट इफेक्ट तो अगर समझो वो पेमेंट अगर अपने को 31 मार्च तक नहीं आया, तो अगर आ गया रहेगा तो 31 मार्च को ही वो बैंक में उसका अमाउंट आ जाएगा, तो बैंक बैलेंस उतना बढ़ेगा, तो बैंक में इफेक्ट आ गया। अगर नहीं आया रहेगा, इफ इट इज़ नॉट कम देन इट शुड बी एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ हम लोग ने प्रिंसिपल लोन के साथ में प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट ऐड किया, सेम वे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में ये इंटरेस्ट ऐड करके ये आ गया। हियर क्या है, ये तो लायबिलिटी था, ये क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो एसेट साइड में है। ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, ठीक है। सो लेट द सेम एंट्री जैस ऑपोजिट हो जाता है। इसका जो है ये जो लोन कैसा था, लोन लिया था, उसके एंट्री कैसा है, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है जो इन्वेस्टमेंट किया है इसका। फॉर एग्जांपल नाउ जस्ट सी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 3 मंथ्स इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट अक्रूड है, मिला नहीं है, इसके लिए वो ऐड बैक करेगा 28 एंट्री नंबर 60,000 तो इंटरेस्ट है। नाउ द बैलेंस इन द बैलेंस शीट द एंट्री विल बी कमिंग इन द एसेट साइड। इसका क्रेडिट इफेक्ट इधर आ गया, डेबिट इफेक्ट इधर आ गया। देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 15 लाख, और इंटरेस्ट अक्रूड नॉट रिसीव्ड, पेमेंट नहीं किया है तो वो ऐड किया है, तो 15,60,000। 28 एंट्री नंबर एडजस्टमेंट एंट्री नंबर इज ऑल्सो क्लियर। नाउ 29th एडजस्टमेंट इज 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पब्लिक पैसा क्यों डालता है, बिकॉज इट इज़ अ सिक्योर्ड बॉन्ड। उसमें जो इनकम आएगा वो पैसा किधर जाएगा नहीं, देयर इज़ नो डाउट, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट बॉन्ड। तो मोस्टली पब्लिक अपना फंड सिक्योर करने के लिए, भले इंटरेस्ट कम रहेगा, द मोर द सिक्योरिटी द लेस द रिस्क। जितना मीन्स जो रेट कम रहेगा उतना सिक्योरिटी भी हो जाएगा, सिक्योरिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना इंटरेस्ट का भी थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो इधर रिस्क कम होता है, इसके लिए पब्लिक इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा डालता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा डालेगा तो उसका इंटरेस्ट मिलता है। तो ये कंपनी क्या किया, उनके पास 10 लाख था, वो जो किया कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दिया, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। तो परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2020। तो पूरा साल का हम लोग ने ले लिया, तो 1 अप्रैल को ही डाल दिया। तो क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 12 मंथ्स, बिकॉज ये भी इन्वेस्टमेंट जैसा ही है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट समझो बैंक में एफडी किया या नहीं तो कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, हायर रिटर्न्स के लिए। और लेकिन दिस इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल दिया है फॉर दो इंटरेस्ट कम, रेट कम है, बट सिक्योर्ड, मोर सिक्योर्ड। तो 1 ईयर का 1 लाख हो जाता है 10% के हिसाब से। तो अगर पेमेंट अगर इंटरेस्ट नहीं मिला है अप टू 31 मार्च तक, तो उसको प्रिंसिपल के साथ में ऐड करेगा, एक्रूड हो जाता है ना, ठीक है। तो वो कैरी फॉरवर्ड करता है। तो एंट्री इफेक्ट सेम एज 28 एंट्री नंबर। तो 28 एंट्री नंबर का जैसा क्रेडिट इफेक्ट अगर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 1 लाख 29 एंट्री नंबर, उसके
सेकेंड इफेक्ट किधर आ गया, और बॉन्ड का वैल्यू के साथ में ऐड हो जाएगा. गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10 lakhs, उसके साथ में इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एडेड, is not received, so this will be carried forward to added to this and taken to the outside of the outer column of the balance sheet. So 10 lakhs plus 1 lakh 11 lakhs. This is the 29th adjustment. So we have completed up to all hidden adjustments and important adjustments in the final accounts. So now मेरा advice क्या है, practice and make sure that you understood it well. अच्छा तरह से समझा कर तब तक ये प्रैक्टिस करो, पढ़ो वापस मेक इट्स वेरी क्लियर, बिकॉज दिस विल बी हेल्पफुल इन योर फॉर योर फ्यूचर स्टडीज एंड ऑल in your life. It will be helpful if you are taking this as a your profession, a commerce or accounts profession करने वाले को ये बहुत help हो जाएगा. So it will be very much helpful to you all. So take it that way. You can download the 3-page PDF file about important adjustments in final accounts and read repeatedly, practice and make thorough understanding. Okay, that is my advice. Okay. Now shall we continue means with the repeat it again for a recapitulation. See, we have done closing stock, outstanding expenses, prepaid expenses, all entries are given, income and received in advance, income receivable, bad debts, reserve for doubtful debts, then reserve for discount on debtors, depreciation working also given detail, then interest on capital, interest on drawings, interest on loan taken, interest on investment or loan given, insured goods destroyed by fire, uninsured goods destroyed by fire, goods stolen, goods distributed as free samples, goods withdrawn by partners for personal use, unrecorded purchases, unrecorded sales, then capital expenditure included in revenue expenditure included in capital expenditure, vice versa. Bills receivable dishonored, vice versa. Bills payable dishonored. Deferred expenses of advertisement paid for 5 years. And then revenue receipts included in capital receipts, commission to partners as percentage of profit of gross profit or sales. I have explained everything in detail. So now then the hidden adjustments, salaries paid for 10 months and then rent paid for 11 months, insurance premium paid in advance, advertisement, this is prepaid expenditure, advertisement for 4 years, deferred revenue expenditure it is. So rent received in for 11 months, 10% loan taken, 16% investment, 10% government. All these adjustments entries we have seen. You can refer it again and again. There are all these things are given very detailed, and you can cross check it. One entry, if it is 2 entry, it will be shown here in entry number 2. So you can correlate and study it, and most of the working also given to make you understand better. Okay, so with this we concluded these adjustments entries in the important adjustment entries in the final accounts. Now let us conclude this session. I request all my students to study regularly. If you don't understand, watch again and again, because I want all my students to score full marks in the subject or just close to 100% mark, and it is possible. Most important, you all must make a strong base in the subject that decides your career, because that is very, very important. What career you select, if you are going for this same line, then it is very, very important, and it will be very much helpful to you. Please read again and again, learn and practice to achieve your life's goal.
help each other to grow together for a better India. There are many talented young students, young generation in our country, and India is going very fast. Our economy is going very fast, so we need a more manpower, better and intelligent and talented manpower. So you have a very good opportunity. So don't miss that opportunity. Grab it, study, and help each other, because we need a huge manpower, because India is growing. Our economy is going very fast. I request you all to share the videos to reach more and more people, so that many students and public can take the benefit. We have explained it several times. Please share the video so that many people and students can take the benefit. Thank you for your attention. Good luck.